Hello students, in previous video we have started the exercise of lesson number 12 and we have completed the fill in the blanks. Now today we will start with matchups. So here in first column we have a constellation visible in winter, the morning stars, the constellation visible in spring, the brightest object in the night sky, a star of average brightness. And in the other column we have the names Sun, Moon, Orion, Ursa Minor, Mercury and Venus. Now let us match them. So a constellation visible in winter. So which constellation visible during winter season? So Sun is not a constellation, Moon is not a constellation, Orion and Ursa Minor, these two are the constellation, and Mercury and Venus are again not a constellation. So out of these two, which constellation visible in winter? So winter में कौन सा constellation हमें visible होता है? That is Orion. So let us match it. Next, the morning stars. So we have learned that morning and evening stars, right? So that are not actually stars, that are planets. So कौन से हैं? Mercury and Venus are also called morning stars. So we'll match it. Mercury and Venus, right? Next is a constellation visible in spring. During spring season, which constellation is visible? So there are only two constellations and one we have already matched. So one is left, that is Ursa Minor. Right? Now the brightest object in the night sky. So night sky, ध्यान से पढ़ना है. Brightest object, अगर हम brightest object बोले then it is the sun. But here the brightest object in the night sky. रात को कौन सा brightest object? So that is a moon. Moon is the brightest object in the night sky. And the last one is a star of average brightness. So we have learned that sun is also a star and it is of average brightness. So इसको हम like this, because यहाँ पर बहुत सारे स्पेस कम है जिसकी वजह से हमको इस तरह से मैच करना पड़ा. So otherwise you can also write the numbers here. So first, a constellation visible in winter, this is 1 number. Now morning star, this is 2 number. Constellation visible in spring, this is 3 number. Brightest, this is 4 number and this is 5 number. So that आपको confusion ना हो कि कहाँ से कहाँ line लगी हुई है. You can also write the numbers. Right? Next is multiple choice question. Tick the correct options. So the planet that can be sometimes seen in the evening sky, even with unaided eye. So कौन सा planet है जो हम unaided eye से भी देख सकते हैं in the evening sky? So Neptune, Saturn, Mercury and Uranus. So ऊपर matchups में भी अभी हमने किया है morning and evening stars. So that is Mercury and Venus. So Mercury is the correct option. Next, the two stars at the top of Ursa Major are called. So we have learned that they points towards the pole star. वो हमें pole star की direction बताते हैं कहाँ पर pole star होगा. So the two stars at the top of Ursa Major are called Pole Star, Big Dipper, Small Dipper or Pointers. So those two stars are called pointers because it points towards the pole star. The Cassiopeia is a bright group of stars in the sky, an artificial satellite, the name of given to the spacecraft, a constellation visible in autumn. So we know that Cassiopeia is a constellation and it is visible in autumn. So this is the correct option. Next is
from the following the objects in the sky that apparently moves least in given time. So इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट है स्काई में जो हमें सबसे कम मूव करता हुआ नजर आता है गिवन टाइम में, राइट? सो नॉर्थ स्टार, वीनस, सन, मून. तो इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट है दैट apparently मीन्स नजर आता है, moves least मतलब सबसे कम in the given time. So that is North Star. ये हमको फिक्स्ड जो है वो नजर आता है, ये सबसे कम मूव करता हुआ नजर आता है, राइट? The brightest planet in the night sky is brightest planet. We are talking about the planet, right? So Jupiter, Venus, Mars and Neptune. This is a very easy question. ये हम लास्ट यूनिट चैप्टर में भी हमने किया है. दैट वीनस इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट आउट ऑफ द 8 प्लैनेट्स जो हमारे सोलर सिस्टम के हैं. उसमें सबसे ब्राइटेस्ट कौन सा है? वीनस. सो द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द नाइट स्काई इज वीनस. On closely observing some bright stars for some hours, one find that stars appears to move from. अगर हम ऑब्जर्व करते हैं क्लोजली ब्राइट स्टार्स को तो कुछ आवर्स के बाद वो हमको अपीयर होते हैं कि वो मूव हो रहे हैं. तो किस डायरेक्शन में वो मूव हो रहे हैं? दैट इज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, वेस्ट टू ईस्ट, साउथ टू नॉर्थ. सो जैसे हमको सन अपीयर होता है ईस्ट टू वेस्ट मूव होता है, वैसे ही बाकी स्टार्स भी हमको ईस्ट टू वेस्ट ही मूव होते हुए अपीयर होते हैं. And you know the reason that because our earth rotates from east to west. Actually stars तो move नहीं करते. क्या move करती है? क्या हमारी जो earth है वो rotate करती है अपने axis में from west to east, जिसकी वजह से हमें appear होता है, ऐसा लगता है कि जो stars हैं ये move कर रहे हैं east to west, right? That we have already learned in the chapter. Now next is the part that is answer the following questions in brief. So let us start the question answers now. Why do we usually not see the star during day? Very easy question. Let us start. First question. Why do we usually not see the stars during the day? So we know that stars अपनी जगह पर ही होते हैं ड्यूरिंग द डे टाइम, बट वो दे आर नॉट विजिबल. वो होते वहीं पर हैं बट दे आर नॉट विजिबल. वाई? बिकॉज ऑफ द सन्स ब्राइटनेस. जो सन की ब्राइटनेस इतनी ज्यादा होती है कि जो स्टार्स हैं वो वैसे भी हमको पॉइंट की तरह लगते हैं, डॉट की तरह. सो वो हमको उसकी ब्राइटनेस की वजह से नजर नहीं आते. सो वी यूजुअली not see the stars during the day time due to sun's brightness. सन की ब्राइटनेस की वजह से वो हमको नजर नहीं आते. Now, in which part of the sky are we likely to find Venus when it is visible as a evening star? So we have learned that Mercury and Venus are morning and evening stars, right? So वो हमें कहाँ नजर आएंगे? स्काई के कौन से पार्ट में वो हमको
विजिबल होंगे एज अ इवनिंग स्टार. So try to find out the answers of the remaining question and we will discuss them in our next video. Thank you.